Welcome to this day as we worship the Lord, and we pray the Lord would bless us and pray that the Lord would strengthen us in our faith as we worship the Lord today. प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं इस इतवार के लिए जो कि 7वां इतवार है पवित्र आत्मा के पश्चात पेंतिकुस्त के पश्चात, और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे. The Lord bless you today. The theme for our worship today is the joy of the Lord's messenger. The great joy of the Lord's messenger. प्रभु यीशु का संदेश सुनने वालों का आनंद. And we believe that, of course, how beautiful are the feet of him who bring good tidings and who publishes peace. कितने सराहनीय हैं उनके कदम जो परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं और देते हैं हमें. And we thank the Lord for this. So God bless us. प्रभु आप सबको आशीष देवे. And as we begin our worship, we say, may the Lord bless you with the message and your prayers that you offer away, that the joy of the Lord may be full in you. Let us rise up and sing hymn number 409, Ye Servants of God. That is there right at the back sheet, a yellow order service, and we will all say together, Almighty God, our Son Jesus Christ sent his disciple to proclaim the coming of your kingdom and to call sinners to repentance. Help us to be faithful messengers of the gospel and not to rest until your kingdom has come on earth as it is in heaven, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने वाले राज्य की घोषणा तथा पापियों को पश्चाताप का आह्वान देने के लिए उनके शिष्यों को भेजा. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सहायता कीजिए कि हम वसु समाज को सच्चे संदेशवंश बने, और जब तक विश्वास ना करें, जब तक आपका सत्य पृथ्वी ना आ जाए, जैसा वह स्वर्ग में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पवित्र आत्मा के साथ
एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। We'll turn to our responsive reading from the Bibles. If you take out Psalm 48 on page 427 in the Bible. Psalm 48. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. His holy mountain, beautiful in elevation, is the joy of the earth. Mount Zion in the far north, the city of great King. For behold, the King assembled. They came on together. Trembling took hold of them there, anguish as of a woman in labor. As we have heard, so we have seen in the city of the Lord of our host, in the city of our God, which God will establish forever. As your name, O God, as your praise reaches to the ends of the earth, your right hand is filled with righteousness. Walk about Zion, go around her, number her towers. Let's say together that this is God, our God forever and ever. He will guide us forever. Be seated. We will have the ministry of the word, first in English, and then the same reading done in Hindi. The first reading, the Old Testament reading, is taken from Isaiah chapter 12, verses 1 to 6. You will say in that day, I will give thanks to you, O Lord, for though you were angry with me, your anger turned away, that you might comfort me. Behold, God is my salvation. I will trust and I will not be afraid, for the Lord God is my strength and my song, and he has become my salvation. With joy you will draw water from wells of salvation, and you will say in that day, give thanks to the Lord. Call upon his name. Make known his deed among the people. Proclaim that his name is exalted. Sing praise to the Lord, for he has done gloriously. Let this be made known in all the earth. Shout and sing for joy, O inhabitant of Zion, for great is your midst, is the Holy One of Israel. This is the word of the Lord. Thanks be to God. सबको जय मसीह की। मैं पढ़ूंगा पुराने नियम से यशाया उसका 12वां अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 6 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, धन्यवाद का गीत। उस दिन तू कहेगा, हे परमेश्वर, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है।
परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरा भरोसा रखूँगा, मैं भरोसा रखूँगा और न थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तुम आनंदपूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे और उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर तुझ में महान है। जब मैं कहूँ हे परमेश्वर, हमारा ये वचन परमेश्वर का है, तो आप कहेंगे परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह परमेश्वर का वचन है, आप कहेंगे परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। The New Testament reading is taken from the epistle according to Philippians, chapter 1, verses 3 to 6 and verses 12 to 18. Philippians chapter 1, verses 3 to 6 and verses 12 to 18. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Verses 12. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. This is the word of the Lord. Thanks be to God. दूसरा पाठ लिया गया है नए नियम से फिलिपियों की पत्री। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी 3 से 6 आयत और 12 आयत से 18 आयत, जो कि पाया जाता है 271 पेज नंबर पे। पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। 12वीं आयत से 18वीं आयत, पौलुस की कैद से सुसमाचार की उन्नति। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है, उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं, उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध में मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ
केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। परमेश्वर के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीष दें। आमीन। आइए हम सब खड़ो के हिंदी भजन गाएंगे, भजन नंबर 15. Let us sing Hindi bhajan 15 right on the booklet, or probably on the screen you will see that. And पावन है वो प्रभु हमारा. Hear the word of God, written Gospel according to Luke, chapter 10, beginning from first verse. Let us say together, Glory to you, Christ Jesus. After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him, 2 by 2, into every town and place where he himself was about to go. And he said to them, The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.
Go your way. Behold, I am sending you out as the lambs in the midst of the wolves. Carry no money bag, no knapsack, no sandals. Greet no one on the road. Whatever house you enter, first say, peace be to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest upon him. But if not, it will return to you. But remain in the same house, eating and drinking they provide. For the laborer deserves his wages. Do not go from house to house. Wherever you enter a town, you receive you, eat what is set before you. Heal the sick in it, and say to them, the kingdom of God has come nearer to you. But whenever you enter a town and they do not receive you, go into streets and say, even the dust of your town that clings to your feet, we wipe off against you. Nevertheless, know this, that the kingdom of God has come near. I tell you, it will be more bearable on the day of Sodom than for that town. Verse 17. The 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fell like a lightning from heaven. And behold, I'll give you authority to tread on serpent and scorpion, even all the power of heaven, and nothing shall hurt you. This is the gospel of Christ. Praise to you, Lord Jesus. Let's rise up and sing hymn number 150, A Charge to Keep I Have. in a very different way. परमेश्वर हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है और
और ऐसी चीज़ें सिखाता है जिससे हम परमेश्वर की मर्ज़ी को जानें। और जब तक परमेश्वर की मर्ज़ी को नहीं जानेंगे हमें नहीं पता लगेगा कि परमेश्वर की मर्ज़ी हमारे जीवन में क्या है। टुडे द डिवोशन इज़ व्हाट इज़ द जॉय ऑफ द लॉर्ड। एक आनंद का समय क्या होता है। हम परमेश्वर का आनंद जब देखते हैं तो हमारे जीवन में किस प्रकार का आनंद रहता है। व्हाट इज़ द जॉय। क्या खुशी हमारे जीवन में हो सकती है। What kind of a joy that we can have in life? Well, we say we have a joy because we are well, our children are with us and we are happy. Our work job is great. We are doing wonderful work. And not only that, we are understanding God's things very well and we thank the Lord for that. And we understand that God is going to sort of bless us. Yes. And we also sometimes think, that the joy of the Lord is something that we can earn, we can have it. We can earn from our ways of our life, the way we live. And we can earn the joy. है ना, आनंद तो हम खरीद सकते हैं हर तरीके से. We can buy, in our work, with our talents, with our gift, with our looks. And with our smile, हम तो आनंद खरीद सकते हैं. हम तो स्माइल करके खरीद लेते हैं. We are so happy and smiling and good. We can buy it out, isn't it? That's so beautiful. खरीद लेते हैं आनंद. हम पैसे से भी बहुत सी चीज़ें खरीद लेते हैं, बड़े आनंद होते हैं. We have a house, we have a car, we have a gold jewelry. बहुत अच्छा लगता है, खरीद लिया हमने आनंद को. बाइबल क्या बताती है? How the Bible say the joy. How can you have the joy? That's what the Bible teaches us. See how the joy become a matter of your strength. आपका आनंद आपके लिए सामर्थ्य कैसे बन सकता है? So if you like to know this, you can take out your Bible and we can think about, sort of Nehemiah chapter 8 and verse 10. I would like to look to that verse. नehemiah की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 10वीं आयत जो हमें बताती है. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food, sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This is the holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." You have opened the Bible, हम एक साथ बोल सकते हैं. The joy of the Lord is your strength. Let us say together, the joy of the Lord is your strength. And you can say it is my strength. ये मेरी ताकत है. परमेश्वर का आनंद मुझ में मेरी ताकत है. और जब ऐसा बोलते हैं कि शोक मत करो, दुखी मत हो, don't feel sad, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारे में दृढ़ गढ़ है. It is a strength, it is a power, that joy. You must be wondering, what is this joy that makes you strength? Well, this is the joy that Nehemiah felt it. Nehemiah उस समय पे वो आनंद का सुसमाचार दे रहा था जब इज़राइल 70 साल की सज़ा खाने के बाद have been punished for 70 years for the things they did. They schemed, they planned, and they went against God. And God delivered them after 70 years. They came back to Jerusalem. And then they came back to Jerusalem. God restored their city. And Nehemiah was the one who was working for them. कई बार होता है हमारे जीवन में रिस्टोरेशन होनी चाहिए. कई लोग तो तकलीफ में ऐसे रहते हैं कि उनके ज़िंदगी का एक वो बन गया है, तौर और तरीका ही बन गया है. They become a pattern of their life. सुबह उठ के मजदूरी करनी है, गालियाँ ही खानी है, गालियाँ ही देनी है, गलत लोग ही मिलने हैं, ये तो होएगा ही होगा. And people have become used to with that pattern of life. And the world has not given us good things. We find that, so Nehemiah found that, the sins of which Israel suffered, they wept bitterly. वो रोए बहुत ज़्यादा. अपने गुनाह के लिए they cried. And they understood, the people of Israel ने याद कर लिया, they remembered it, that God's redemption is only the joy of their life. परमेश्वर उनको छुटकारा देगा, वही एक सबसे बड़ा आनंद
उनके जीवन में है। और जब ये ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर सबका आनंद है, वो ऊपर उठाएगा उनके जीवन जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, परमेश्वर उनको छुटकारा देगा और छुटकारे की योजना वो सहमति होगी उन्हें, वो मानेंगे इसे। और वो इज़राइल ने किया नेहमाया के समय में। इट इज़ नॉट अ टाइम ऑफ सॉरो, इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। ये आनंद का समय है, दुखी होने का समय नहीं है। नेहमाया कहता है सेट अपार्ट फॉर वर्शिप एंड ग्रैटिट्यूड, अपनी आराधना जो है और उसके लिए निर्धरता से करो। सेट इट अपार्ट, जो निर्धारित की है, पवित्र दिन और आराधना। एक पवित्र दिन दिया गया है और उस पर आराधना करें। ये इससे तुम ये जो निर्धारित की गई चीज़ें, इनको अलग रखो, इनको बनाए रखो। इससे इनको जो है दुनियावी चीज़ों, डोंट ब्रिंग इट योर सिन एंड शेम एंड फॉरगेट योर हेवनली फादर, डोंट डू दैट। ऐसा मत होने दीजिएगा। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ चेंजिंग गॉड। एक और चीज़ बताई है नेहमाया ने यहाँ पर, बोलते ईट द चॉइस फूड, अपने चॉइस का भोजन खाइएगा। यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। When I was meeting my son when I was in Canada, he used to tell me, पापा आप क्या खाओगे? Now this is something rare, बहुत बड़ी बात है। And my wife keeps saying every day that never affected me. But when my son said in Canada, आप क्या खाओगे, वो असर पड़ा। Sometimes you take it for granted when somebody asks you क्या खाओगे at home. आपके husband wife पूछते तो बोलते क्या पूछे जा रहे हो दोबारा है, जो देना है दे दो। पर हमेशा पूछा जाता है। वाइफ्स लव टू आस्क, टाइम्स हस्बैंड आस्क व्हाट डू यू लाइक टू ईट टुडे। अच्छा आज अखनी पुलाव खाने का मन कर रहा है, तो अखनी पुलाव बन जाता है शाम को। मन करता है कि अच्छी टेस्टी चीज़ बनाई जाए। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। मेक अ चॉइस फूड, द चॉइस शुड बी देयर इन द फूड। द फूड शुड नॉट बी बाय कंपल्शन। दोपहर हो गए, चलो रोटी खानी है, जो भी है बनू के खिला दो, पेट में जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। डोंट टेक फूड फॉर ग्रांटेड। Nehemiah say food has to be of choice. When you make a choice, you will cherish it. आपको बहुत आनंद मिलेगा खाने में। हम ना अपने खाने को बहुत take it for granted ले लेते हैं, कभी इधर खा लिया कभी उधर खा लिया। But when you sit down and think, today I have to eat food, a choice food. Add adjective along with that. Choice food. मेरे मन पसंद का खाना मुझे खाना है। That's what Nehemiah had said this. Rich, अच्छा हो, tasty हो, है ना, आधा कच्चा आधा उबला हुआ नहीं हो, not half cooked, boiled, which you don't like it. Some people like it, but generally rich. It should be rich in food. Food has to be rich. आपके पास सब कुछ है किचन में, but how to make it rich is in your hand. आपके ऊपर होता है उसे rich बनाना। Special dishes prepared with care. Nehemiah कहता है carefully prepare your food. I know some mothers are beautiful, very good cook. Very good cook. They are so good. They make the choice food very carefully. सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं बनता है अच्छा खाना, अपने लिए भी बनाइए ना। घर में जब आप रहते हैं तो क्या खाएं, सूखी रोटी चाय में डाल के खा ली, नहीं ऐसा ना करें। कई लोग कहते हैं ना रोटी तो रखी हुई है, रोटी तो खानी है, क्या है, ऐसा सोच के, ऐसा नहीं रखा। Don't do like that. I mean, prepare with care. संभल के मसाले डालिएगा अपने, अच्छी चीज़ें पदार्थ, ताकि वो टेस्टी लगे, खुद को भी लगे, जो खाने वाले हैं। You see, that's what the food is all about. Then, enjoy sweet drinks. उस ज़माने था वाइन पीते थे, ड्रिंक जो होता था वाइन होता था। Wine was very common in the life of Israel. Instead of water, the wine they used to drink. It doesn't quench only your thirst, but it gives you energy. That's the dates and wines, they give energy to your body in that country. तो एक स्वीट वाइन पीजिएगा, उस समय ये बताया गया है, एक अच्छी ड्रिंक पीजिएगा। दैट इंक्लूड्स स्वीट वाइन एंड रिफ्रेशिंग ब्रेवरेजेस टू मेक इट अ सेलिब्रेशन। जब आप सेलिब्रेट करते हैं कि ऐसा करें that people see the food and they rejoice it. The joy remain in them.
the abundance of blessing come with good food. कहते हैं ना, that's what Nehemiah is saying. You will get abundance of blessing when you eat good food in your home. It also further means that, the tough times will be there. In Christian life, we have tough times. But what we have done, what Jesus allowed us, that tough times, He brought joy into the lives of the people. The passage that we read to us reminds us 72 people, 2 by 2, were sent. What happened in the end? He gave them authority. We do not know किस प्रकार की authority दी, पर authority दी थी उन्हें. He gave them authority. Probably they were given a special power by Jesus to them. So when they put their hand, effect of Jesus will pass through them and reach to them. He never gave them power to become Jesus. So let me make it very, very clear. The passage that is read to us, He gave them power to do things that they honored Jesus. And so they have the power with serpents, scorpions, Satan. ये दुष्टा की आत्माएं, दुष्ट चीजें जो थी, वो they were going out. They were running away. And these people were so, the scripture says, the joy was upon them. These disciples were so joyfully came to Jesus. बड़े आनंद खुशी से यीशु मसीह के पास आए. क्योंकि ऐसा था, ये शिष्य वो लोग थे जिन्होंने कभी किसी पे हाथ रखे, किसी की दुष्ट आत्मा तो छोड़ो, किसी पे हाथ भी नहीं रखा होगा blessing. They have never put a hand on blessing for anybody. But God had chosen them and He gave them authority, and something amazing happened. Something like this. You're sitting at your home and your son comes at home and he tells, Dad, this is the key for you. Your dad will say, what? Ye kya hai? That this is a car for you. Great joy. Or probably the daughter comes to your home and the first salary she brings, I say to mother, Mom, this is my first earning. Ye meri pehli tankha hai. माँ कहेगी ये क्या है? वाह, इतना सारा पैकेट, इतना कुछ लेके आई है. Joy of something that you never expected to happen, that happens to you. That's what Jesus did to the disciples and to all of us. It reminds, no matter what circumstances we may live, but love that is God has promised continue to live. This joy comes when you read Psalm 28, 28 Psalm पढ़ेंगे और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे, Psalm भजन 28 और उसकी 7. When you read Psalm 28 and verse 7, the Lord is my strength and shield. I trust Him with all my heart. Help me, and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. क्या मतलब हुआ है हिंदी में? प्रभु मेरी शक्ति और ढाल है, मैं पूरे दिल से उस पर भरोसा करता हूँ, वह मेरी मदद करते हैं, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, मैं धन्यवाद के गीत गाता हूँ. You see, the great joy comes by singing and praising God from your heart. I think एक क्वेश्चन इससे उठता है, for where this joy comes from? ये आनंद आता कहाँ से है? Where this joy comes from? I think the joy comes where Israel experienced, and you can experience what Jesus did with the disciples. It's come from deep connection with the Lord. एक गहरा संबंध जो परमेश्वर के साथ है. The joy comes from there, nowhere else. Deep connection with the Lord. It's not just an emotion, but it is an assurance that Lord, joy has come to you. You're assured. आपको आश्वासन हो जाता है. आप प्रतीति करो कि परमेश्वर का आनंद आपके पास है. The joy of the Lord is upon you. And think that way. We know that, for years you have suffered. For years. But when you think of the joy, Lord give you as a meaningful and lasting relationship with Him. आनंदमय वाला जीवन जो अनंत काल तक बना रहेगा. That's what He does. And that's what He made us know. 2 Corinthians उसका 5 उसकी 21 आयत क्या कहती है? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. हिंदी में क्या कहता है? जो पाप
से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया और हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। See, he was not aware, but yet he did great joy. This is the joy which comes from that Jesus, who took our sins, but not knowing the sin, still he took upon himself to cleanse us, to heal us, to restore us. That's the purpose of that joy. वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए. See that you remain in that joy. Don't lose this joy. इस आनंद को प्लीज मत खोइएगा, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हम सब पे बना इसी वजह से है. It doesn't fade, it remains. You know, if you will read Psalm 48, the devotion that I did in the morning also, अगर मौका मिला तो आप YouTube में उसे देख लीजिएगा. It is all about the joy of Jerusalem. कल हमारी प्रेयर डे था चर्च का, आपको बता दें, आपको राकेश ने बताया था. कुछ लोग आए थे, हमने दुआ करी थी और पूरी परिस्थितियों के लिए, सारे विश्व भर के लिए, अपने चर्च के लिए, सब के लिए दुआएं करी. जो पीड़ित है, जो जवान है, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वी प्रेड फॉर ऑल ऑफ देम फॉर यू. देन वी अबाउट 10-15 आ गए थे कुछ लोग, तो हमने दुआ शुरू करी और 1:30 बजे तक दुआ करी हम लोगों ने. एंड देन वी हैड द लंच एंड देन वी वेंट अवे. Every last Sunday of the month, we have a prayer time over here. We meet here. So if you are interested, if you feel God is burdening you to pray with the church people, do come. मैं आपके ज़्यादा नहीं बोल रहा, because it's a voluntary. Come. You have a burden for prayer in your heart. You feel I need to pray with others also. Come. The greatest reconnection that God created in us is through Jesus Christ. उससे हमारा कनेक्शन हुआ है, उसका पक्का आनंद अनंत काल के लिए प्रेम बना. भजन 48 में यरूशलेम जो है वो एक जो ऊंची पहाड़ी पे है, एक आनंद का विषय है. सुंदर, उससे ज्यादा सुंदर कोई पृथ्वी पे चीज नहीं है. भजन कहता है दूसरी आयत में, उससे ज्यादा सुंदर देखने वाली चीज कोई है नहीं. यरूशलेम है, द जॉय ऑन एलिवेटेड हिल, the beauty of the whole earth. It says it's the beauty of the whole earth. And the generation will tell this. आने वाली संतानें और आने वाली संतानें कहेंगी, यरूशलेम जहां से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है, जहां अपने परमेश्वर ने एक सुंदरता रखी अपने मंदिर के अंदर और लोग उस सुंदरता में आराधना करते हैं. Those people who worship in truth and righteousness, the beauty of his holiness will be revealed to the nations of this world by the generation and generations to come. For our God is a God who is an everlasting God. हमारा परमेश्वर जो अनंत काल से अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है. See, this is so beautiful. You must pray for Jerusalem. You must pray for Israel. That should be your burden, you know. Since the Israel came to existence, the nations have always said annihilated. मतलब जब से इज़राइल बना है, परमेश्वर ने बनाया ना, अपने हाथों से बनाया इज़राइल को, है ना. इब्राहिम के ज़रिए उसने इज़राइल को बनाया, और जब वो बनाया उसके ख़ानदान के ज़रिए इज़राइल देश बना है, तो तब से जो है दुनिया पीछे पड़ी हुई है. उसको नाश करो, उसको नाश करो. एंड मैनी नेशंस हैव कम अगेंस्ट इज़राइल टू डिस्ट्रॉय इट, टू annihilate it. The latest part is the nation. They are saying it openly. We will finish Israel. See, every nation leader, whenever said that, they were never able to do it. And they can never able to do it. Because you know why? Because the joy of the Lord is with Israel. They have seen the joy of the Lord. He is the apple of their eye. Israel is the apple of Lord's eye. उसको कोई छू नहीं सकता है. That's what Bible says. वो आँख की पुतली के समान है इज़राइल. वो परमेश्वर का आनंद है. वो परमेश्वर की वाचा है. It is the covenant people of God. You shall be known by my name, and the world will know through you my name, who I am. दुनिया पहचानेगी सिर्फ तुम्हारे जरिए. That's the greatest joy. Church is like that. Church को कितना पासबानों को, prophets को, disciples को कैसे काटा, मारा, जला दिया. They have destroyed in the nations the churches, but church still remain. The empires went away, the nations went away, the leaders went away, सब आए, सब चले गए. The church remains.
You know the power of joy? The power of joy that comes through Jesus Christ, his personal relationship of his people. जिन्होंने उसको घटन जाना है, the remnant of God, खास चुने हुए जो दुआ करते हैं. They are prayer warriors who live by the word of God. That's the church. You're called as a remnant. You're called out from the people. आप लोग और हम लोग दुनिया में से निकाल के बनाए गए, to set apart. The joy. What a privilege. You have been set apart. I mean, there were many other people, but he has chosen you, us. Don't let this joy go away, friends. Don't let this joy go away, no matter what happens in your life. ये आनंद जो हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का और उसके घराने में उसकी सेवा करने का. The way we got into the vineyard of our Lord to serve, it's a privilege. It's a privilege. बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिलता है. आपको मिला है, please don't let it go out of your hand by only selfish means, vested means. अपने खुदगर्जी में, अपनी मनमानी में, दुनिया की बातों में, दुनियावी तरीके से चीज़ों को चर्च में लाने से नहीं. ये तो भटकने वाली बात है. This will go away from the Lord. So I just pray the Lord will root our relationship with God in his love. That's the greatest message today. For all the messengers, Jesus said, go and give this message of joy to the ends of the earth. ये आनंद का सुसमाचार सबको सुनाओ. I hope you will do that. जो भी काम करते हैं, आपके परिवार हैं, God has blessed you, family, children, so many things that God has given you. Joy of salvation, joy of eternal life, joy of personal relationship, joy that will never leave you because it's everlasting. It's going to remain with you. परमेश्वर आनंद आपके और हमारे जीवन में और वो restored relationship जो परमेश्वर का है वो हमारे जीवन में बना रहे. The joy that was set before us. आखिरी में कहूँगा Hebrew chapter 12 verse 2. मैं उस आयत को बोल के ख़त्म करना चाहूँगा. उसमें यूँ लिखा है, looking into Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा. Let's pray. Lord, let the joy that is there before us may remain. That is said before us, Lord, we are the joy of the Lord. We are, Lord, who receive salvation, are the reason to think about the cross and live by the cross. Willingly face our sins, our shames, under the shadow of the cross. Lord, help us to bridge this gap which has been brought by the sin and death, for having a restored relationship with joy of a salvation, joy of having love, the pure joy, the secured eternal redemption. पवित्र आनंद जो हमको छुटकारा देता है. Thank you, Lord. Now we can say, sin can no longer separate us from God. And the joy of walking with him in every day. Lord, help us to remember this, practice this in our life, and flourish joyfully with the personal encounter relationship, fellowshipping, and living together. In Jesus' name we pray.
Shall we all stand and affirm our faith, reciting the Apostles' Creed found on page 109 in Book of Worship, page 109. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, the only Son of Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. कलीसिया बैठ जाए. Let us pray. We shall go a time of intercession, remembering our dear ones in prayer. Lord Jesus, our Savior, as we continue to pray, to bring to God our needs, our joy, and our sorrows to the Lord. Lord, the Heavenly Father, give wisdom, O Lord, to empower another people and other countries, for them to govern their nations, that they may foster peace among them, may bring justice, and the devastation that they have destructed through war. Lord, we pray the starvations that are come by the weapons of war. We pray for our President, the Prime Minister, the Chief Justice, the Judiciary, the Lieutenant Governor of Delhi. Grant that we may all direct this nation, all nations, on the way of justice and peace, that we may live with dignity, security, and liberty. Lord, in your mercy. हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने नगर के लिए, दिल्ली क्षेत्र के लिए, जो गरीब हैं, जो लोग न्यायाधीश की ओर देखते हैं सामाजिक न्याय के लिए, उनके बच्चों को याद करते हैं और अक्सर अपने बचपन के वंचित रह जाते हैं, अपने बचपन के जीवन से परेशानी की युक्तियों में रहते हैं. प्रार्थना करते हैं कि जीवन में सही दिशा और उनको सही स्थान उनको समाज में उन बच्चों को मिले. हम शिक्षकों के लिए, शास्त्रों के लिए, छात्रों के लिए, विद्वानों के लिए, कलाकारों के लिए, लेखों के लिए, उन सभी जो लोग के विचार जो हृदय पे प्रभावित करते हैं, उनके ज्ञान और कौशल समझ करने व प्राप्त करने की शुभ इच्छा गृहस्थ हो और उसके द्वारा को सबको लाभ मिले. हे दयावान प्रभु, we pray for our children, our elders who are terminally sick, devastated due to war and conflict, especially in Gaza, Syria, Lebanon, Ukraine. Give strength and hope for the better future to the suffering, the poor and hungry, the destitute and the oppressed, the unemployed, the sick and the dying. Lord, in your mercy. Lord, we pray for our church members, अपने कलीसिया के लोगों के लिए दुआ करते हैं, अपनी सारी संस्थाओं के लिए, कलीसिया की फ्री चर्च के लिए, उसकी सेवाओं के लिए. Pray for the ministry of free church, the work the free church is doing, Lord. We pray for the whole congregation, their family, their children, their elders, all of them, Lord. Provide to the point of the need. प्रभु जो इनकी ज़रूरतों को आप दीजिएगा, उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो. अगर होए, परमेश्वर आपका आनंद में बने रहें और आप हर चीज़ अपनी योजना के अनुसार अपने समय पे पूरा करें. उनको सफल दें, तरक्की दें परमेश्वर एक एक जन को. प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के जन्मदिन हैं प्रभु जी. Pray for those who celebrate their birthdays this coming week. 28th of July, Mrs. Premlata David, Mr. G.S. Raju, Mrs. Vinita Shaw. 29 तारीख को मिस सांध्या मिन्स,
Miss Alicia Massey, Dr. and Mrs. J.V.R. Joseph, their wedding anniversary. Mrs. Gloria David. Dua karte hain, Lord, pray on 30th of July, Mr. Siddhant Fraser. On 31st, Miss Mania Safir. Master Arush Smith on 31st. On 1st August, Dr. Sanjay Baksh, Mr. Azim Qureshi, Mr. Victor Washington, Dr. Charmaine Mukherjee. On 2nd, Mrs. Aruna Jacob and Mrs. Atisha Benjamin. And on 3rd, Mr. Rahil Jeremiah and Master Nehemiah Malagar. These are the people who are going to celebrate their birthday. And we thank you, Lord, for their life. Bless them, Lord Jesus. Lord, in your mercy. हम भारत के समस्त विश्व कलीसिया के सब के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से अपने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस के लिए दुआ करते हैं, उसकी यूनिटी, उसके विटनेस, उसकी सेवाओं के लिए जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में करते हैं। हम दुआ करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेड के लिए, डायसिस ऑफ दिल्ली के लिए और तमाम डायसिस के लिए। वी प्रे फॉर बिजॉय आवर मॉडरेटर एंड थियोडोडियस द मेट्रोपॉलिटन मार्थोमा चर्च and those who are administrating the Church of South India. दुआ करते हैं हमारे बिशप डायसिस के बिशप पॉल स्वरूप और तमाम पासबानों के लिए, all the presbyters और जो सेवाएं करते हैं पूरी डायसिस में, that Lord they may be faithful in your ministry. प्रभु जो अपने कार्य में विश्वास योग्य रहें. Lord, in your mercy, let us remember, we commend our loved ones who have departed from this one, especially remember Savita, Rakesh's sister, who has slept in the Lord last week. That, Lord, we look ahead, Lord Jesus, for your unfailing love in them that we may be fulfilled. And we rejoice at the faithful witness of your saints in every age, praying that we may share with them in your eternal kingdom. Lord, in your mercy. Let us say together, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions, which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.
प्रिय भाई और बहन, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। और दूसरी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। God so loved the world that he gave his only son Jesus Christ to save us from our sin, to be our advocate in heaven and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandment and to live in love and peace with all people. Let us all say together, Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done. Through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault, we are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins. Confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. Shall we all rise up and share the peace of the Lord together? And before we praise God and sing hymn, we are the body of Christ. In the one Spirit, we are all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always with you. Peace be with you. Peace be with you. We shall remain standing and sing hymn number 305, Onward Christian Soldier. And during singing of this hymn, offertory will be taken.
Let's say this is the joy. This is the joy, great joy. The third stanza. Let us say together. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus Christ constant will remain. Gates of hell can never against that church prevail. We have Christ's own promises, and that cannot fail. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. He that goeth forth weeping and taketh the seed with him shall come back with gladness as he bringeth home his sheaves. And the peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among us now and forever. Go in peace to love the Lord in the name of Christ. Let us rejoicefully go over here joyfully by singing hymn number 483, Rejoice, the Lord is King.